नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू bizbotany। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एंड euglenoids usually because of their larger size they can easily absorb under a microscope. These plastids bear some pigments which imparts different color to the plants. Some pigments which are present in the plastids are, they are nothing but a chloroplast, which contains a chlorophyll pigment, and carotenoids will be present, which imparts a green color to the plants. Second type of pigments which are present in a plastid nothing but a chromoplast, which contains a fat soluble carotenoids. And xanthophyll pigments will be present, which impart yellow, orange or red color to the plants. Third type of plastids which are present nothing but a leucoplast. Usually they are colorless pigments. In leucoplast we have three types. They store food material. They don't have any color pigment. They just store a food material. In that, first one is amyloplast, which stored carbohydrate. Elioplast, which stored iron fat. Aleuroplast, which stored a protein material. These are the three types of pigments which are present in plants. Majority of the chloroplast will be present in mesophyll cells of a green plant. They are usually, इसका शेप कैसा रहेगा क्लोरोप्लास्ट का? दे आर लेंस शेप्ड भी हो सकता है। लेंस शेप बोला था, कौन सा शेप? दिस वन। ओवल शेप, ओवल बोले तो एग शेप, और स्पेरिकल बोले तो ऐसा स्पेरिकल शेप देखने को मिलेगा, और रिबन शेप का भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। They may be a lens shaped, oval shaped, spherical shape, ribbon shaped. Their size, their width varies from 2 to 4 micrometer in length. In width, in length, they are 5 to 10 micrometer. इसका लेंथ कितना रहेगा? 5 to 10 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। उसका विड्थ कितना रहेगा? 2 to 4 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा। Just like a mitochondria, these chloroplasts also contain two membranes. That's why we call a double membrane structures. This outermost membrane we are calling like a outermost layer, or inner membrane we are calling it as a inner membrane. Inner layer we are calling it as a inner membrane. Inside the inner membrane is less permeable to the materials. Inside the inner membrane we have space. This space we are calling it as a stroma. Inside the stroma of a chloroplast we have many number of flattened membranous sacs. We call them as a thylakoids. These thylakoids are arranged in the form of stacks, just like a piles of coins
कॉइन्स को जैसा कि एक के ऊपर एक रखने के बाद कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, stacked up thylakoids, we call it as a collectively a grana, grana बोलेंगे. Membranous flattened tubes which connects the thylakoid up to different grana. यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम थाइलो ग्राना बोल रहे हैं. यहाँ पर एक ग्राना है, बहुत सारे ग्राना देखने को मिलेंगे. ग्राना के अंदर इस स्ट्रक्चर फ्लैटन मेम्ब्रेनस ट्यूब विच कनेक्ट्स टू थाइलाकॉइड अप डिफरेंट ग्राना. एक ग्राना है, एक ग्राना है, इसके अंदर एक थाइलाकॉइड देखने को मिल रहा है. जो फ्लैटन मेम्ब्रेनस ट्यूब विच कनेक्टिंग to thylakoid upper different grana, this structure we call it as a stroma lamellae. Stroma lamellae. Stroma lamellae. The space present within the thylakoid, ये जो thylakoid के अंदर space देखने को मिलेगा, उस space को हम बोलेंगे lumen. The space which is present inside the thylakoid, we are calling it as a lumen. Usually this stroma contains a many more number of enzymes and proteins which are required for the synthesis of a carbohydrate like a glucose molecules. Glucose and protein को synthesis करने के वास्ते जो भी enzymes चाहिए, they are present inside the stroma of the chloroplast. Also, this stroma contains a small circular double-stranded DNA. This region, stroma regions, contain a small circular double-stranded DNA, and it also contains some ribosomes. They are 70s. 70s ribosomes also present in the stroma of the chloroplast. Why they are here? Because for the synthesis of many more enzymes which are required for the glucose carbohydrate synthesis, they are produced inside the chloroplast only. That's why some circular DNA will be present and 70s, just like in the prokaryotes. Prokaryotes के अंदर जैसा 70s ribosomes देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा के अंदर 70s ribosomes देखने को मिलेंगे. आउटरमोस्ट जो भी सेल है प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको 80s राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे. बट इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट वी हैव 70s राइबोसोम्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज समथिंग अबाउट द plastids. Thank you.